अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के बारे में है। लेक्चर ओवरव्यू हमारा कुछ ऐसा है कि आज इस लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक डेफिनेशन फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड देन इज द CIA। व्हाट इज CIA? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल जैसा। और नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। व्हाट्स गोइंग टू बी द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर when we are going to design our information security system. And then is the information classification, how the information is classified in different categories. For private sector organizations it's different, and for the government organizations it's a different policy. So we will see later what it's going to be like. Firstly, introduction. Information security, it is sometimes shortened to InfoSec. That's the short name for information security. And what it is the practice of defending on information from unauthorized access, unauthorized use, unauthorized disclosure, unauthorized disruption, unauthorized modification, unauthorized inspection, unauthorized recording, or unauthorized destruction. That's what information security is. हमारा कोई भी asset है, for example a physical asset, we can take our computer or our house or agriculture land or a bank. So we have did different prevention measures so that no intruders can harm the property or the currency etc etc. जैसे सिक्योरिटी कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वगैरह वगैरह, हम वी ऑन है लाइसेंस गन्स एक्सेट्रा, जो भी हम सिक्योरिटी मेजर्स करते हैं वो फिज़िकल वर्ल्ड में। तो इसी तरह जो साइबर वर्ल्ड है इसके अंदर भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, टॉप सीक्रेट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं वगैरह वगैरह। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम्स डिज़ाइन किए गए हैं जो कि एम्बेड हैं सिस्टम्स के अंदर ही। वी जस्ट हैव टू एक्टिवेट देम. So that's the basic definition for information security, or it is a general term that can be used regardless of the form of data may take. Either it's an electronic data or a physical data on the paper is a general definition for it. The next is the CIA principles. What is the CIA? It is based on three things: confidentiality, integrity, availability. Three things we can have. We can see in this short picture. We can say कि अच्छा CIA का सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या है, पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा कॉन्फिडेंशियलिटी CIA में क्या चीज़ है कि हम अलाउ करते हैं ओनली ऑथराइज सब्जेक्ट्स टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन दैट्स ऑन द सिस्टम और इन द सर्वर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो allowing only authorized subjects to access the information is called confidentiality. Integrity is allowing only authorized subjects to modify the information. They have integrity is that only authorized personnel can modify the information that we have in our system or in server, whatever it is. Availability क्या है, ensuring that information and resources are accessible when needed. When we need some resource, those resources are available. Or either if it's an information, when we need it, it's available. These are the three components that make the CIA principle. Whenever we design a security system, we should base those systems on these basic three entities, which is confidentiality, integrity, availability. Acha, now we reverse the CIA. Reverse, what is going to be the reverse CIA? Preventing unauthorized subjects from accessing information. Integrity will be preventing unauthorized subjects from modifying information, and availability preventing information and resources from being
inaccessible when needed. So whenever there is an unauthorized user, the resources should be unavailable, unavailable, whatever we call it. Acha, whenever we are using the CIA principle, we should look into these things, which is we should think in terms of the core information security principles, and we should question ourselves, how does this threat impact the CIA? We know some threats, we should look into it, and we should compare that how it's going to affect the CIA, and what controls can be used to reduce the risk to CIA. And if we increase confidentiality, will we decrease availability? I, we should question ourselves, and while designing, there should be the security governance as well. Are going to be policies, there's going to be procedures, standards, guidelines, and baselines. These are part of this, if not part, is you can say small part of the CIA. Security governance is the organizational process and relationships for managing risk, which include policies, procedures, standards, guidelines, baselines. Also includes organizational structures, roles, and responsibilities. When we are we are making a policy. So where we can see into the policy mapping, how the policies are mapped. On the top we have laws, regulations, requirements, organizational goals, objectives. Then comes general organizational policies, and then comes the functional policies. Under the functional policies we have procedures, standards, guidelines, and baselines. The details of all this is given into the handouts that you will have in your user account, or you can access it online from the course website. Now it is very important to have a structure. Without a structure, very difficult. We Because in the structure we know who is doing what, who is who, etc., etc. So in an ideal organizational structure, or we can say as an example for the information security organizational structure, what we should have, or what we have, is the first comes are the board of directors, trustees, then comes the president, and then comes the CIO, chief information officer. Under chief information officer we have security director, and under security director we have different heads: project security architect, enterprise security architect, security analyst, and system auditor. We can further make it security oriented by acha. Here we have a saying: true, we slow you down, but we try not to let criminals slip by. So the more the system is secure, the more time taking it is. So it's obviously going to slow the system down. The performance going to be down, but we are going to make the system secure. So here the designers, they have to look into one factor: what performance level they want to achieve, and what security level they want to achieve. Because if you increase the security, you are going to decrease the performance. If you increase the performance or improve the performance, you are going to decrease the security. So there is going to be a trade, a trade between the two entities. So we have to balance both of these while designing a security system. So further we can say that board of directors, trustees, president, CIO, and under CIO we have now the two heads. One is IT audit manager, and the other is security director. Under IT audit manager we have system auditor, and under security director we have enterprise security architect, security analyst, project security architect. We should that's an assignment. We can say that we have to find out the duties of security director, CIO,
project system security architect, enterprise security architect, etc., etc. That we should know who is what and what they do in an organization. Acha, we can further do a separation by board of director trustees. There is another head audit committee, and under audit committee is going to IT audit manager, and then under that is system auditor. On the other side is going to be president, uh, which is then presiding CIO, internal audit, and then CIO is under CIO we have security director, enterprise security architect, security analyst, and project security architect. That's we have. And now some bookish work, we can say that audit should be separate from implementation and operations, and independence is not compromised. Responsibilities for security should be defined in job description. Senior management has ultimate responsibility for security. Security officers, managers have functional responsibilities. अच्छा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो हम इसमें ऐसे डिवाइड कर दें चाहिए जी. लीज प्रिविलेज हो, मैंडेटरी वेकेशंस हो, और जॉब रोटेशन है. 3 शिफ्ट हैं, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, तो इसको कॉन्स्टेंटली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रोटेट होते रहें, और ड्यूटीज़ जो हैं वो सेपरेट हों. और ऑनर्स जो हैं डिटरमाइन जो ऑनर, कोई भी ऑनर हो या इंचार्ज हो, दे डिटरमाइन दी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स. क्या है इनकी रिक्वायरमेंट क्या है. इसमें कस्टोडियंस भी होते हैं जो कि सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं, बेस करती है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर. फिर यूज़र्स, हमारे पास ऑब्वियसली यूज़र्स है, ये सब जो हम डिज़ाइन करें यूज़र्स के लिए करें, तो यूज़र्स को भी एक्सेस अलाउ होना चाहिए बाय एज़ पर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, कि क्या उनका लेवल होना चाहिए एक्सेस का, कौन सी इन्फॉर्मेशन वो एक्सेस कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं. जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और जो इंस्ट्रक्टर्स टीचर्स वगैरह हैं तो उनको जो है वो आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल है. तो इसको ये एक इसको समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल है. अच्छा, तो फिर हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन है. इसको क्लासीफाई किया गया है, हम कैटेगराइज कर लेते हैं ना, तो काम आसान हो जाता है. कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डिफरेंट कलर के पेन हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट, एक्सेट्रा. तो हम उनको डिफरेंट अलग-अलग कर देते हैं जी, ये ब्लू है, ये रेड है, ये येलो है, ये फलां है. तो काम करना आसान है. जब भी हमें जो चीज़ चाहिए होगी हम उठा के उसको उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजेज भी साथ में होता है. तो इसी तरह इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन है कि नॉट ऑल इंफॉर्मेशन हैज़ द सेम वैल्यू. सेम वैल्यू क्यों नहीं होती, कोई इंफॉर्मेशन है वो कैटेगरी ए यूज़र एक्सेस कर सकते हैं, फिर कैटेगरी 2 है जो कि 1 और 2 के एक्सेस कर सके, कैटेगरी 3 है 2 और 1 और 3 तीनों वो एक्सेस कर सकते हैं. अभी 1 जो है वो 2 और 3 नहीं एक्सेस कर सकता, 2 जो है वो 3 नहीं कर सकता. तो इस तरह इसको क्लासिफाई किया गया है. अच्छा, वैल्यू डिटरमाइंस प्रोटेक्शन लेवल. प्रोटेक्शन लेवल्स डिटरमाइन प्रोसीजर्स. लेबलिंग इन्फॉर्म्स यूजर्स ऑन हैंडलिंग. अच्छा, इसमें गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन जो है वो डिफरेंट है, प्राइवेट सेक्टर की डिफरेंट है. गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन क्या है भाई, ये टॉप सीक्रेट है, ये सीक्रेट है, ये कॉन्फिडेंशियल है, ये सेंसिटिव बट अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है. प्राइवेट सेक्टर में क्या है, कॉन्फिडेंशियल है, प्राइवेट है, सेंसिटिव है और पब्लिक है. अच्छा, इसका क्राइटेरिया क्या है, वैल्यू देख लें, एज देख लें, यूज़फुल लाइफ देख लें, पर्सनल एसोसिएशन देख लें. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 13, जिसमें हमने देखा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिफिनीशन क्या है, CIA, रिवर्स CIA, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन है. तो 4 टॉपिक्स हमने इसमें पढ़े हैं. इसको आप और भी इन डेप्थ हैंडआउट्स में भी देख सकते हैं. इंटरनेट सबके पास उम्मीद है मौजूद होगा, तो इंटरनेट के ऊपर भी इसको सर्च कर सकते हैं. काफ़ी helpful information है. We definitely going to have a chance to design some security system, then we will use this information
and otherwise we, if we have the information, we know the rights etc etc. تو انشاءاللہ لیکچر نمبر 14 میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اگر کوئی آپ کے پاس کویسچنز ہوں، کیوریز ہوں، تو آپ ہمیں ای میل کر دیں یا ایم ڈی بی میں پوسٹ کر دیں. اوکے جی، بہت شکریہ. السلام علیکم.